बहुत ही सुंदर डेकोर जो होगा एकदम अलग। आप अपने घर को यूं ही डेकोरेट कर सकते हैं DIY करके, जिस तरीके से मैं अपने घर को डेकोरेट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, जो गिरी होती हैं, वो ली है मैंने, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि जितने साइज़ का हमें इसको बनाना है आर्ट को, उसी तरीके से हम साइज़ लेंगे। ये मैं हाथ से कट कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक बनाना सिखाऊंगी और आप इसको देखकर जो 5 हैं वो बना सकते हैं। आप अलग अलग शेप में इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई अलग से शेप समझ आती है तो वो आप उसको भी कर सकते हैं। मैं इसको धागे से सिक्योर करूँगी सभी को और अच्छे तरीके से बांधूंगी ताकि मेरा जो ये लकड़ियाँ हैं, ये ट्विक्स हैं, ये हिले ना। तो अच्छे से हम इसको सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद जो एक फोम आती है, हम इसके कपड़े उससे बनाएंगे। जो आपको मतलब जो आप सूट खरीदती हैं उसके अंदर एक अलग तरीके की फोम होती है, वो मैं उस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और जो फोम मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें क्या होता है, कलर जो हम लगाते हैं ऊपर से उसमें अच्छे से फैलता नहीं है, तो उसके लिए आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसमें ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो अलग अलग शेप मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी शेप ली है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं नॉर्मल जो पेंटिंग कलर होते हैं आप वो यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी उसी तरीके से कोई भी वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं पेंट करने के लिए।
Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. पीछे का बैक है ये एकदम क्लीन है। हम इस पे जो हमने वॉल आर्ट बनाया है उस पे हम प्लेस करने वाले हैं। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।